Hyundai has finally launched the 2024 Creta in India after a long wait. ये गाड़ी के spy shots कब से हम देख रहे थे and today we are going to do a detailed walk around of the new Hyundai Creta facelift second generation which came out in 2020. This is the facelifted model of that and you can clearly have a look at all the design changes that have been done to the face of this car. गाड़ी के फोटोज हम लोग ने पहले देख लिए. Lot of people had mixed opinions. सबसे पहले engine देख लेते हैं. 1.5 liter diesel engine same as before. It makes 115 PS of power, 250 Newton meters of torque, 6-speed manual, 6-speed torque converter. इसके साथ आपको 1.5 turbo petrol भी मिल जाता है. Most powerful engine in the segment, 160 PS and 253 Newton meters of torque with a 7-speed DCT. You can have a look at the insulation right here. पूरा bonnet ये लोग ने under bonnet जो है वो पूरा cover कर दिया है. And now this is the face of the Hyundai Creta facelift. आप देख सकते हैं नए lights, नई grill, नया bumper, नए DRLs, 2D Hyundai logo, flat Hyundai logo जो Hyundai Ioniq में भी हम लोग ने देखा है. दिस इज द DRL ऑफ द कार जो एक्सटेंड होता है गाड़ी की पूरी विड्थ को कवर कर लेता है. दिस इज द न्यू इंडिकेटर ओवर हियर. 3 blocks you get. This is the low beam and the high beam. No fog lamps on the Hyundai Creta unlike the Kia Seltos which gets those lights. And what are your thoughts on the design? Let us know in the comment section below. This is the new camera over here and you can have a look at all the numerous design elements at the face of the Hyundai Creta. Now we'll move on to the side of the car. You can have a look at the green color. This is the new green shade. वहाँ पे आपको एक black गाड़ी दिख जाएगी. This is the new green color and I think this is something which has not been offered on any other Hyundai car in India at least. And from the side, the Hyundai Creta looks similar to the previous model. This is the side camera. And this car has 17-inch alloy wheels. Even on the top end variant, the Kia Seltos X line gets 18-inch wheels. इसमें 17 आपको मिल जाता है and these are more cost effective also when it comes to replacing them. From the side, the Creta looks the same as before. आपको जो silver element मिल जाता है that has also been carried over from the previous model and अब आ जाते हैं गाड़ी के पीछे की साइड पे. You can first have a look at this shark fin antenna right here and the panoramic sunroof of the car. गाड़ी को पीछे से देख लेते एंड अगेन लॉट ऑफ चेंजेस ओवर. न्यू बम्पर, न्यू लाइट्स, न्यू टेल गेट एंड न्यू रिवर्स लैम्प. तो धीरे धीरे एक एक चेंज देख लेते हैं. फर्स्ट अप वी हैव दिस शार्क फिन एंटेना. दिस इज द रियर वाइपर सेम एज बिफोर. न्यू Hyundai लोगो इंटीग्रेट किया गया है इसमें एंड दिस इज द न्यू टेल लैम्प ऑफ द कार. न्यू LED इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड दिस इज द सिंगल रिवर्स लैम्प राइट हियर. पीछे से कैसी लगती है आपको Hyundai Creta वो भी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. A close look at the lights of this car and let's open the boot. Boot capacity is the same as before, 433 liters and this is the shape of the boot. यहाँ पे आपको Bose का subwoofer मिल जाता है and here's the spare wheel of the Hyundai Creta. So we are not allowed to share our opinions on the car right now. उसके लिए detailed video आएगी कल सुबह 11 बजे. But meanwhile we are allowed to show you the car properly. So देख लेते हैं Hyundai Creta. बूट बंद कर दी हम लोग ने एंड नाउ आई थिंक इट इज टाइम टू जंप इनसाइड द कार. गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं. सो या लेट्स ओपन द ड्राइवर सीट फर्स्ट, the driver's door first and get inside the driver seat. So I am now sitting in the Hyundai Creta over here. आप देख सकते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड कंप्लीटली चेंज किया गया है. I'll move the car to P मोड. गाड़ी को बंद कर देते हैं फिर वापस स्टार्ट करेंगे. So this is the start stop button right here. The position is again the same as before. Lot of buttons on the cabin of the Hyundai Creta. This is the D-cut steering wheel जो पहले आ जाता था and the center console is redesigned. The dashboard has an all new design. This car has dual zone climate control. Again this was not offered on the pre-facelift Hyundai Creta. तो इसमें आपको आ जाता है and you can have a look at the controls for the AC over here. अच्छे खासे physical buttons आपको मिल जाते हैं. New 10.25 inch screen over here and you can have a look at the user interface and the graphics of the screen. रिवर्स कैमरा ये गाड़ी में 360 कैमरा मिल जाता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वालिटी ऑफ दैट. सो आई हैव स्लॉटेड द कार इनटू रिवर्स एंड हियर्स अ 3D व्यू ऑफ द कैमराज फीड. इसमें आपको व्हाइट कलर की क्रेटा दिख जाती है यहाँ पे एंड यू कैन हैव अ लुक एट ऑल द सराउंडिंग्स नियर द कार. 2D मोड भी आ जाता है. यू कैन टॉगल थ्रू द डिफरेंट कैमरा मोड्स एंड एंगल्स. तो ये भी एक यूजफुल फीचर दिया गया है. एंड नाउ वी हैव अ न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 इंच. अगेन you can have a look at the clarity, the resolution of the cluster right here and इसमें आपको कई तरीके के menus and functions मिल जाते हैं to help you navigate through all the information that you need about your Hyundai Creta. So I'm just scrolling through the menus. You can have a look at them. The buttons of course are located on the steering wheel for that and yeah, this is the same steering wheel as the pre-facelift Creta.
D-cut steering with a flat bottom, and you get the regular controls on the left side. You get paddle shifters. Right side पे आपको ADAS के buttons मिल जाते हैं, and ADAS level 2 features are offered on the Creta जो पहले नहीं आते थे. Seltos also gets these features. Day night IRVM मिल जाता है आपको automatic, and yeah, the center console is tweaked in design. So I think changes are definitely there. A lot of changes have been done. Type C port मिल जाता है, normal USB port मिलता है. Gear selector is the same as before, and you get front ventilated seats. 3 अलग-अलग levels आपको मिल जाते हैं for the driver and for the front passenger. Drive mode selector, traction mode selector, उसका display आपको यहाँ पे मिल जाता है. And when you change the drive modes, the display of the speedometer also changes. So of course you get these snow, mud and sand modes, बट ड्राई मोड्स भी आपको मिल जाते हैं. इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, उसमें वो क्लस्टर का डिस्प्ले चेंज हो जाता है. 2 बॉटल होल्डर्स हो ईयर, सम पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द डैशबोर्ड. यू गेट 3 डिफरेंट कलर्स हो ईयर. आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है टू कीप योर फोन और योर बिलोंगिंग्स. AC वेंट्स हो ईयर. यहाँ पे AC वेंट ऊपर मिलता है, फिर बीच में नीचे मिलता है, एंड यहाँ पे भी आपको नीचे मिल जाता है AC वेंट. देयर इज अ स्मॉल मैग्नेट ऑल्सो हो ईयर, बट it may or may not be able to take the weight of your heavy phone. Hyundai Ioniq में भी हम लोग ने ऐसा मैग्नेट देखा है, which is a little bigger in size. These are the buttons for the regular power windows and all that, same as before. And यहाँ पे भी मैं आपको buttons दिखा देता हूँ. You get the auto start stop button, traction control off button, parking sensors button, and of course the Bose speakers on the door pads of the Hyundai Creta. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं गाड़ी में बात करने के लिए. अभी मैं आपको सिर्फ वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ new things I'll reveal in tomorrow's video. You can have a look at the seat covers of the car. New seat covers, new upholstery, new stitching over here in orangish brown color, I can say that. Dual tone seat covers you get, and the armrest cannot be slid back and forth, लेकिन वो open हो जाता है, and इसमें आपको storage area मिल जाता है. You can clearly have a look at the 2 big bottle holders, and yeah, I guess I have covered up most of the things of the Hyundai Creta's interior. Another look at the screen of this car. इसमें सेटिंग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है. एंड कमिंग टू व्हीकल सेटिंग्स, यू कैन हैव अ लुक एट ऑल द ADAS फंक्शंस ओवर हियर व्हिच कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड. एंड इसमें आपको थीम मिल जाती है, अलग अलग थीम्स दिखा देता हूँ. येस, सो दीज आर द थीम्स फॉर द instrument cluster, speedometer basically, and these can be customized according to the drive mode also, and you can also manually change them. अगर आपको रेड वाला कलर ही पसंद है कोई भी मोड में तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड अगेन दीज आर द बेसिक सेटिंग्स एंड फंक्शंस दैट यू गेट ऑन द Hyundai Creta. यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है. आई थिंक दिस वॉज प्रेजेंट अर्लियर ऑल्सो. यू गेट दीज वाइट LED लाइट्स फॉर द कैबिन. इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल दोनों साथ में भी कर सकते हैं. लेट्स ओपन द पैनोरामिक सनरूफ. I think a lot of people used to love the pre-facelift Creta for the big sunroof that it offers. पीछे तक पूरा extend होता है, and अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं. So I think it is now time to go back in the rear seat of the Hyundai Creta. तो पीछे बैठ जाते हैं, देखते पीछे क्या क्या changes है. In fact, are there any changes or not? So this is the space of the Hyundai Creta over here, and you can clearly have a look at the new dashboard. पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा और clearly दिख जाए आपको नई screen, नए panels, and the whole new design theme over here. So coming back to the rear seat, what is new? Not a lot of things are new over here. You get this sunshade, जो कुछ महंगी घड़ियों में भी नहीं आता है, बट या दिस कार हैज़ दैट फीचर. इसमें आपको स्पेस इतनी मिल जाती है. स्पेस यू कैन हैव अ लुक एट द स्पेस ओवर हियर. Again, no opinions right now, but you get 2 Type-C ports and a small storage area. You get rear vents. You can have a look at the hump in the middle over here, and you can also have a look at the headroom, which I have right here. तो headroom आपको मिल जाता है, यहाँ पे pillow मिल जाता है, and you get this Creta embossing over here. तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो एड्रेस फॉर द मिडिल पैसेंजर. वो आई थिंक मेरे हिसाब से दे देना चाहिए था, बट यू गेट अ प्रॉपर 3-point सीट बेल्ट इवन फॉर द 5th पैसेंजर, एंड यू कैन हैव अ लुक एट द हुक्स राइट देयर. तो ये था ड्यूअल टोन इंटीरियर Hyundai Creta का. देयर इज अ सिंगल कलर ऑप्शन अवेलेबल फॉर एवरी वेरिएंट ऑफ द Hyundai Creta. Kia Seltos has 3 different color options. In fact, even the previous Creta used to get a black interior with red orange inserts for the turbo variant when it was launched. But overall ये था आइडिया Hyundai Creta का. कैसी लगी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. But that's not all, because I also have something, I have this bonus with you. So this is Hyundai Creta, and this is on the left, the underpinning of the Hyundai Creta. तो गाड़ी तो देख ली हम लोग ने, अभी इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, and we'll see how the Hyundai Creta is built. So you can have a look at the
कंस्ट्रक्शन ऑफ द Hyundai Creta राइट हियर. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील हैव बीन यूज्ड एंड इसमें आप देख सकते हैं पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है. व्हाट डज दैट सिग्निफाई? यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, माइल्ड स्टील, यू कैन सी ओवर हियर. एंड आप देख सकते हैं कौन से एलिमेंट्स पे कौन से स्टील का यूजेज किया गया है. सो दिस इज हाउ द कैबिन ऑफ द Hyundai Creta feels like, how it is built like on the inside. अलग अलग स्टील की पोजिशनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, सनरूफ का ओपनिंग देख सकते हैं. एंड दिस इज हाउ द फ्लोर ऑफ द कार लुक्स लाइक बिफोर द कार इज प्रॉपरली असेंबल्ड. तो ये देख लेते. एंड Hyundai claims that they have made some improvements to the build quality of the Creta. They say that it would now perform better in a crash test or something like that. So I think of course that's a step in the right direction, and let's see how it goes. So I just wanted to show this portion with you guys. तो कैसी लगी Hyundai Creta बताओ नीचे comment section में. And yeah, looking forward to tomorrow's video.